श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी। श्री निर्मला देवै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने, हृदय में श्री माता जी को देखेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। हृदय में श्री माता जी की छवि को निरंतर निहारते हुए श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय में आइए। श्री माता जी, हम आपके श्री स्कंद माता स्वरूप को हृदय से नमन करते हैं। कृपा करके हम सभी के हृदय में स्कंद माता स्वरूप को जागृत कीजिए। मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री स्कंद माता साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माता जी, आप ही तो श्री जगदम्बा भी हैं, आप ही श्री दुर्गा भी हैं। हे जगदम्बिके, हमारे हृदय के द्वार खोलिए। हमारे इस हृदय में श्री जगदम्बा स्वरूप में संपूर्ण शक्तियों के साथ अपने श्री चरण कमल लेकर आइए। माँ के श्री चरण कमलों की परिक्रमा अपने हृदय में 7 टाइम्स क्लॉकवाइज करेंगे जगदम्बा मंत्र के साथ। ओम त्वमेव साक्षात् श्री जगदम्बा साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
राइट हैंड को सेंटर हार्ट पे रख के श्री जगदम्बा करेंगे 12 बार। जगदम्बा 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 जगदम्बा। दोनों हाथ माँ के सामने, संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में। बाएं हृदय पे चित्त, बाएं हृदय पर शिव माता जी के श्री शिवा पार्वती से प्रार्थना। शिव माता जी कृपा करके हमें निर्लिप्त साक्षी प्रदान करें। शिव माता जी हमारे बाएं हृदय में श्री शिव तत्व जागृत कीजिए। शिव माता जी, ना मैं शरीर हूँ, न मन, न बुद्धि, न अहंकार। माँ, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। शिव माता जी, ना मैं शरीर हूँ, न मन, न बुद्धि, न अहंकार। शिव माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। धीरे धीरे अपना संपूर्ण चित्त को राइट हार्ट पे। श्री माता जी, आप ही दूसरी सीता और राम भी हैं। कृपा करके हमारे दाहिने हृदय में जागृत हो जाइए। तीनों हृदय को बारी बारी देखेंगे। बाएं हृदय, दाएं हृदय, सेंटर हृदय। सेंटर हृदय को सिर के तालु भाग से जोड़ेंगे। संपूर्ण चित्त सिर के तालु भाग पर श्री निर्विचारिता मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अथ श्री अर्गला स्तोत्रम्। श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री अर्गला स्तोत्रस्य विष्णुर्ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ मार्कण्डेय उवाच जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। मधुकैटभविद्राविविधातृवरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। महिषासुरनिर्णाशविधातृवरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। रक्तबीजवधे देवि चण्डमुण्डविनाशिनि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। शुम्भस्य च निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। वन्दिताङ्घ्रियुगे देवैर्देवि सौभाग्यदायिनि।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवि भक्तजनोद्दामदत्तानन्दोदयेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचण्डदैत्यदर्पघ्निचण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुरशिरोरत्ननिघृष्टचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इन्द्राणीपति सद्भावपूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवि शश्वद्भक्त्या त्वमम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्तीह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवि परं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वकामांश्च देहि मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम् तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु 70 संख्यावरमाप्नोति सम्पदाम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे अर्गलास्तोत्रं सम्पूर्णम्। स्वरूप पे आ जाता है तो आप सारी सृष्टि को एक साक्षी होकर के देखते हैं और आप पर किसी चीज का असर नहीं आता। दूसरी बात यह है कि जो प्रश्न है आपके उसका हल इससे बाहर निकलने पे ही होता है। जब तक आप उसमें उलझे हुए हैं आपके प्रश्न कभी ठीक हो ही नहीं सकते। उससे जब आप बाहर निकल आते हैं तभी आप इस प्रश्न को ठीक कर सकते। तो यहाँ पर बसा हुआ जो श्री कृष्ण का कंठ का स्थान है इसमें भी 2 हिस्से हैं, एक को जैसे लेफ्ट का है और एक राइट। लेफ्ट में श्री विष्णु माया का स्थान। श्री विष्णु माया के बारे में आप जानते हैं कि जो उनकी बहन थी जिन्होंने
स्वर्ग में जाकर के आकाशवाणी करी थी, बादलों में से गरज कर कहा था कंस से कि तेरा मारने वाला अभी जीवित है। वही आकाशवाणी आज भी कार्य करती है, जो बिजली है ये भी कार्य करती है। और आप कभी देखिएगा तो आपको आश्चर्य होगा कि हमारे भी फोटो बड़े कमाल के आते हैं। और जो ये कैमरा जिसे हम सीधी सादी चीज समझते हैं, इसने ऐसे ऐसे हमारे फोटो निकाल दिए हैं कि आप हैरान हो जाइएगा। यहां तक कि बादलों में तक हमारे फोटो आते हैं। ये आकाशवाणी का कार्य है, ये विष्णु माया है। इस विष्णु माया पर ये कहना है कि जब हमें भाई बहन का विचार नहीं रहता, जब हमारे अंदर ये शुचिता नहीं, हम जब दूसरी औरतों के और बुरी निगाह डालते हैं, तब भी ये चक्र पकड़ जाता है। या किसी कारणवश हम ये सोचते हैं कि हम पापी हैं, हम दुष्ट हैं, और इस तरह की बेकार की अपने बारे में न्यून कल्पना कर लेते हैं, तब भी ये चक्र पकड़ता है। ये कल्पना कहीं कहीं बहुत ज्यादा मैं देखती कि हम तो पापी हैं, क्योंकि रात दिन जो आता कहता तुम लोग पापी हो, ये संसार पापी है, और जो बताने वाला वो कौन बड़ा धर्मात्मा है। ये सब बातें सुन सुन के मनुष्य अपने को इतना नीचा गिरा लेता है कि उसकी ये लेफ्ट विशुद्धि पकड़ती है, और इसको पकड़ जाने से अगर हृदय में भी पकड़ आ जाए तो अनजाना जैसी बड़ी घातक बीमारियां हो जाती है। रात दिन कभी पत्नी, कभी पति, कभी घर, कभी समाज, किसी भी औरत में यह हमेशा बढ़ते रहता है कि तुम बड़ी खराब। उस वक्त ये चक्र पकड़ जाता है और इससे अनेक बीमारियां हो जाती, पर सबसे घातक बीमारी इसकी अनजाना की है। दूसरी जो राइट साइड है, उसमें हम जिसे महाराष्ट्र में विट्ठल कहते हैं, और जिसे आप कहिए कि द्वारिका में बसे हुए श्री कृष्ण जहां राज्य कर रहे थे, उनका स्थान है। तो जब गोप गोपी बन के यहां रहते थे, तब उनका बीचों बीच स्थान है, और जब वो राज कर रहे थे द्वारिका में, तो उनका राइट, और जब लेफ्ट में आप देखते हैं तो उनकी जो शक्ति स्त्री है वो उनकी बहन है। बीचों बीच में श्री कृष्ण की राधा, और इधर उनकी रुक्मिणी, उनकी पत्नी जो थी, वो उनकी शक्ति थी। 5 शक्तियां वो और 16,000 और शक्तियां सारी श्री कृष्ण की यहाँ विट्ठल के स्थान पे है। लेकिन इसमें भी इतने दोष आ गए कि विट्ठल की मूर्ति पंढरपुर में उनका साक्षात हुआ, जैसे आपके गोविंद महाराज की यहाँ मूर्ति आई है स्वयंभू। उसके बाद लोगों ने वहां पे अपना धंधा शुरू किया, और लोग एक एक महीना मुंह में तंबाकू डाल के विट्ठल 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 करते हुए पैदल जाते थे। अब तंबाकू जो है ये कृष्ण के विरोध में, उनको बिल्कुल तंबाकू नहीं पसंद। जो लोग तंबाकू खाते हैं उनका ये चक्र खराब हो जाता है, या जो तंबाकू पीते हैं उनका ये चक्र खराब हो जाता है, और इसीलिए उनको कैंसर की बीमारी होती है। इसका इलाज है आप अजवाइन की धुनी मुंह में लें, अजवाइन का पत्ता जला करके और उसकी बीड़ी फूकें, श्री कृष्ण उससे खुश रहते हैं। दूसरा इसका इलाज है कि आप मक्खन को दूध में या पानी में, गर्म पानी में डाल के उसे पिए, उनको मक्खन बहुत पसंद है। नाक में आप घी डालें, घी और थोड़ा सा कपूर, क्योंकि कर्पूर गौरव आप जानते हैं कि आप कपूर के बड़े शौकीन है, सो कपूर थोड़ा सा डाल करके वो नाक में छोड़ें, कपूर माथे पे लगाएं। जो कुछ श्री कृष्ण को पसंद है वो सारा करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं, और आपका विशुद्धि चक्र ठीक हो सकता है, आपका कैंसर ठीक हो सकता है, आपकी सारी तकलीफें ठीक हो सकती। जब आप सबका गला पकड़ जाता है तो मेरा भी गला पकड़ जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत पड़ जाती है उसको ठीक करते करते, तो भी पहाड़ जैसे लोगों की कुंडलिनी कभी कभी उठती ही नहीं, बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। खासकर विशुद्धि चक्र पे ये 3 ऐसे पेंच बैठे हुए हैं। उसमें से ये कि जो लेफ्ट विशुद्धि है, अगर मंत्र वगैरह किसी गलत गुरु से लिए है और बक रहा है उसको सुबह से शाम तक, तो वो मंत्र भी पकड़ जाता। इन सब चीजों के लिए उसका इलाज सहयोग में हरेक का मंत्र रूप भी है, आसन रूप भी है, और भी
कुछ उसके साथ में थोड़ा बहुत जैसे पानी, जल या चीनी, इस तरह की चीजें दे करके किया। But if you are really connected with this divine power, you may keep awake for 3 days and 3 nights, will not be tired. It has happened with you sometimes. But the attention should be on the power. Attention should be on the connection that we have with this power. Then only. Otherwise you'll be exhausted, naturally. Everything so logical. So logical it is. Thank God and thank yourself. Thank your luck. You are so fortunate that you are very few who have achieved this connection and that you are sucking that power within yourself so easily. Now why are you behaving like these ordinary street people? With your stupid questions? You'll be surprised that Goddess in previous lives never spoke so much as I have spoken. 1 or 2 words were sufficient. Like she said, who? And kill this. Ha? Finish that. All these things she managed only by saying who, ha, he. But they never gave realization to anyone. None of the incarnations, they said, no, not me. Not me, Sari. I am not going to do it. They must have seen human beings, how stupid they are. Oh God, nothing, I am all right. I can go to jungle for 14 years. I can do the driver's job with Arjuna, or I can get crucified, or I can take poison. But don't tell me to deal with human beings. No. It's better to go to a zoo than to go to this. And that's why none of them. And some of them it did not even talk about it, thinking that if we talk, they'll say, then why not give us the realization? None of them. So this is the Adishakti's compassion, love, and confidence. That you should have also confidence. Not only that I have given you realization, but I have given you powers that you can give realizations to others. None of these incarnations did that, which you are doing today. With all their powers, they did not do it, while you can do it, despite the fact the instruments are not so strong, not so divine. But still, we have to come up and work out in our own lives the priorities that we have. For the gods, the priorities were only divine work, nothing else. Nobody took up a job, nobody. Nobody went to university, nobody studied. Only thing they did was the work of God. So you do everything else as work of God. And that's how the energy will flow into you. When you start doing the work of God, everything you do becomes work of God. In the sense that you do the work of God, you decide, I'm going to do the work of God, then God takes over. He does all the rest of the things, you do only the work of God. He takes over. I hope you understand this. Try. Have confidence.
And also thank God there is someone like your mother who can tell you what's wrong with you. Thank God. Even your mothers didn't tell you what was wrong because they were so frightened of you. And don't say then when you say something, mother, my heart catches. I mean, what can you do then? If you understand that this is for your improvement, I am doing it, it's out of love, out of concern, then you'll work it out. But I don't think it is so much of a mental understanding, but it's the understanding of a higher level, where it becomes just part and parcel of your awareness. How can it be wrong? It all has to be good for me. Everything is good for me. Last but not the least, one must understand that as all the 7 chakras I am working on are in a collective way held by me, by Virata, the quality of Viratangana is that she creates this universal awareness within us, the collectivity. And if you do not realize that in modern times we are in a spiritual path in a collective way only, this is what it is. Because we have reached to the stage of Sahasrara. And here we have to have a collective working only, there's no other way out. This is what is to be absolutely realized. Anybody who tries to harm the collectivity by bad behavior or by anything will be thrown out, no doubt, but also will fall into wrong hands. So collectivity is the work of Adishakti. Because at the Sahasrara is the rule of Virata. And the power of Virata is the Viratangana, is the one who does collectivity. This is the most important point we must know. If we cannot be collective, because of anything, jealousy maybe, inferiority complex, maybe anything which is coming from behind, like a worm crawling up, then know that something wrong with you, nothing wrong with the collectivity. Don't criticize the collectivity till I myself find it out and I'll put it right. Keep to the collectivity wisely and earnestly and try to keep the collectivity together. Try to help to keep the people collective, to enjoy together. Don't criticize each other. Only criticize yourself if you are in the habit of criticism. Better criticize yourself is better, because these are habits also. People, especially I've seen people in the West, they react to everything. If they see this carpet, oh, I don't like it. But this is not yours, you have not paid for you, what have you got to do with it? No, I don't like it. But it's not yours. What's the question? It's lying here, why should you be so upset about it? I don't like that person. I don't like that dress. Who are you? I don't like. This is not allowed in Sahaja. I don't like. There is a way of saying things. But there is no need to say anything whatsoever. So all this kind of bumptiousness and showing off is against collectivity.
Then there are some other stupid type of people who are always there to take my photograph. I've seen them. You tell them, don't be so forward, don't go. No, I will. I don't do this. I am not. Finished. But some of them are really confirmed, certified, I think. Stupid idiots. They cannot be improved. But I told you that don't make them your ideals. Don't fall their images. So then, we come to this point that Adi Shakti's work is the most important work in the whole creation. All right, killing the demons was over. What is it? Done. Saraswati's work was done. She created universe also. So what? Mahalakshmi's work was done. She brought it to human level. All right. So what? But the climax is now that you have got your realization that you have got this special quality, that now you have entered into the kingdom of God. So now behave yourself. And also you must have that dignity to know that now we have entered into the kingdom of God. I've seen once, I was going to see the President of India. But to me, he was another human being. I mean, it never goes into my head, this presidentship and all that. He was walking up, and those who were walking with me became very conscious, you see, like this. I said, what's the matter with these people? Have they seen some ghost or something? Just going on the steps, there were some people standing with, you see, spears and things as guards or whatever it is. So I was just laughing at all that. But these people became very conscious. But when you are entering into the kingdom of God, how conscious you should be about your behavior. How you should be, how you should behave. This is the song they are going to sing. Was written Namadeva, by Namadeva in the 16th century, who went then to Punjab, and Guru Nanak Sahib, you see, knew who he was, and he asked him to write poems in Punjabi language, and he's done such a big compilation, I know that. This Guru was he was just a tailor, and he went to meet another realized soul who was a potter. And when he went and saw the potter kneading the clay with his feet, he just stood there watching. The potter's name was Gora Kumar. Looked at him, and what does he say? In Marathi he says that, but meaning that I came to see here the formless, but it is in the form. I see it in the form. I mean, only a saint can say it to another saint. That's what happened, that he went up to Punjab, where Guru Nanak Sahib called him, looked after him, and asked him, and they made beautiful, such beautiful songs there are, and they are in Granth Sahib. They are all in Granth Sahib. This is the folk song which was written, which says, "Oh Mother, give me my realization." Yoga means yoga. Please give me that. All that they sang, all the time they have been singing, even now, but they don't know what it is. And they are saying, "Oh Ambe," means the Kundalini, please rise, rise. And with that you can also clap, which will help a lot. I'm sure this will definitely consolidate your self-realization. It's a village song, it's a stick.
Ekal
Now you feel. Just try to feel now. Let's see. You must be feeling more. Just see. All right? Now again, let's see how many of you have really felt on your fingertips or from the pointer-nail, toenail, or on your palms. Raise your both hands. Oh, so who didn't feel before have felt it. So many of you. Thank you very much. May God look after. And also have wisdom to respect your freedom. Respect your new status. The real freedom is now. So you respect your self-realization and become a fully self-realized personality. That will help everywhere. May God bless you all. अस्य श्री अर्कला स्तोत्रमन्त्रस्य विष्णु ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोऽस्तु ते मधुकैटभविद्रावी वेधार्तु वरदे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि महिषासुरनिर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि शुम्भसैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि वन्दिता
चरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि स्तुवत्यो भक्तिपूर्वत्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चण्डिके सततं ये त्वां चयन्ति हा भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्य आरोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि द्विषतां नाशं विदेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुरशिरोरत्ना निकृष्टचरणिम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि
चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इन्द्राणी पति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी प्रचण्ड दोर्दण्ड दैत्यदर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी भक्त जनोद्दाम दत्तानन्दोदयेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति सम्पदा इति दिव्या अर्गला स्तोत्रम् सम्पूर्णम् साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला